Hello friends, welcome to the problem solving video lecture series of complex number. In this video lecture and in the upcoming video lectures, we will solve problems based on category 2 of class C. So basically category 2 के जो भी problems है उसमें हमें nth root of unity find करना होगा, यानी कि roots of 1 raised to 1 by n, और इनके जो भी रूट्स होंगे उस रूट्स का यूज करके हमें कुछ रिलेशंस को प्रूव करना होगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैटेगरी 2. So in the first question of category 2, we have to find cube root of unity. So cube root of unity means 1 raised to 1 by 3. Okay, so let this is equals to xk. और नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 रेज टू 1 बाई 3 के जो 3 रूट्स होंगे उनमें से जिन रूट्स में i का टर्म होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, और उसे क्या क्या कहा गया है यहाँ पे, ओमेगा. ओके, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस ओमेगा रेज टू 6 इक्वल्स टू -27. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में. सो दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos 0 प्लस i sin 0 रेज टू 1 बाई 3. अब इसे हम जनरलाइज करेंगे. जनरलाइज करने के लिए हम 0 में ऐड करेंगे 2 पाई के. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos 2 पाई के, बिकॉज 0 प्लस 2 पाई के इज 2 पाई के. ओके, सो cos 2 पाई के प्लस i sin 2 pi k raised to 1 by 3, and now using De-Moivre's theorem this can be written as cos of 2 pi k by 3 plus I sin 2 pi k by 3. so अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 3. सो k के अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ 0, 1 and 2, then I will get 3 different roots. So for k equals to 0, x0 equals to cos 0 plus i sin 0 which is equals to 1. अब ये कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है क्योंकि यहाँ पे i प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, if k equals to 1 then I will get second root, that is x1 equals to cos of 2 pi by 3 plus i sin of 2 pi by 3. अब 2 pi by 3 क्या होता है, pi minus pi by 3. ओके, सो cos of pi minus pi by 3 क्या हो जाएगा, minus cos pi by 3. so this is equals to minus cos pi by 3 plus अब sin of pi minus pi by 3 क्या होगा, plus sin pi by 3. so that is sin of pi by 3. so this is equals to, now pi by 3 is cos pi by 3 is root I think 1 by 2. okay, so this is cos pi by 3 is 1 by 2 and sin pi by 3 is root 3 by 2. so this is complex root. okay, so I can say because I is present in this root, so I can say this is equals to omega. okay, because omega is complex cube root of unity. Similarly, if k equals to 2, then x2 which is third root equals to cos of 4 pi by 3 plus I into sin of 4 pi by 3. okay, now 4 pi by 3 can be written as pi plus pi by 3. okay, so 4 pi by 3 can be written as pi plus pi by 3, and cos of pi plus pi by 3 is equals to minus cos pi by 3, and sin of pi plus pi by 3 is also minus sin pi by 3, because in third quadrant sin and cos both are negative. so sin of pi plus pi by 3 is minus sin pi by 3. now this is equals to, so I can write it as my cos pi by 3 is 1 by 2, so this is minus half minus I root 3 by 2, because sin pi by 3 is root 3 by 2. so if you observe here, if I take second power of omega, that is omega square, so here omega is minus half plus I root 3 by 2. okay, and second power will be square of this expression. so this is equals to 1 by 4 plus, that is a square, plus 2 into a into b plus b square, that is I square 3 by 4. so this is equals to 1 by 4 minus root 3 by 2i. now I square is minus 1, so I will get minus 3 by 4. so this is equals to 1 by 4 minus 3 by 4 is minus 2 by 4, which is minus half minus root 3 by 2i. so you can see that this is actually third root. okay, so third root is equals to omega square. so यहाँ पे आप अगर इस पर्टिकुलर को ओमेगा लेते थे x2 को, तो आपको ये ओमेगा स्क्वायर मिलता था. ठीक है, सो आप ओमेगा किसे भी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें i का टर्म हो, बिकॉज ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक, सो नेक्स्ट में हमें क्या प्रूव करना है, 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू 6 इक्वल्स टू -27.
अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट रूट 1 है, सेकेंड रूट को मैंने ओमेगा लिया और थर्ड रूट क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर. So if I add this all three roots, that is x naught plus x1 plus x2, so ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस x1 को मैंने क्या लिया, ओमेगा, और x2 क्या मुझे मिला, ओमेगा स्क्वायर. So this is equals to 1 plus, now what is omega, it is minus half plus I root 3 by 2. What is omega square, it is minus half minus root 3 by 2i. So यहाँ पर देखिए ये सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसल हो गए, ठीक है. एंड यहाँ पर एक्चुअली में दिस इज माइनस हाफ, सो ये -1 होगा तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और ये जो आई रूट 3 बाई 2 था वो माइनस आई रूट 3 बाई से कैंसिल हो जाएगा और मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0. ओके, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0. अभी इस इक्वेशन और यहाँ से भी आप ये देखेंगे कि x के इक्वल्स टू क्या है, 1/1/3. सो ये ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हेंस आई कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू 1/1/3. क्यों, बिकॉज ओमेगा इसी का रूट है तो ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. तो एक्स के का एक वैल्यू क्या है, ओमेगा भी है, इसलिए एक्स के की जगह में ओमेगा भी लिख सकता हूँ. दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1. ओके, सो यहाँ पे दो इक्वेशन मुझे मिली, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है, तो जहाँ पे आए हैं उनमें से किसी को भी आप एक को ओमेगा ले सकते हैं. तो नेक्स्ट जो टर्म आए वाला है यहाँ पे वो ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली में, तो यहाँ पे मैंने इसको ओमेगा लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर इसे ओमेगा लेता तो ये ओमेगा स्क्वायर होता था. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप इसका स्क्वायर लीजिए तो आपको यही मिलेगा, ठीक है. सो अभी मुझे प्रूव क्या करना है एक्चुअली में कि 1 माइनस ओमेगा रेस टू 6 इक्वल टू क्या है, -27. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है. सो 1 माइनस ओमेगा रेस टू 6 कैन बी रिटन एज 1 माइनस ओमेगा द होल स्क्वायर रेस टू 3 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 omega plus omega square raised to 3. Now what is 1 plus omega square? From this equation I can write 1 plus omega square equals to minus omega, since 1 plus omega square equals to 0, therefore 1 plus omega square equals to minus omega. So यहाँ पे 1 plus omega square minus omega पुट करो तो मुझे मिलेगा -3 omega raised to 3. Okay, so this is equals to -3 the whole cube into omega cube. So what is omega cube actually? Omega cube equals to 1 because omega इस particular equation को satisfy करेगा. यहाँ पर क्या दिया गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मुझे फाइंड करना है और एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ओमेगा. सो देयरफॉर आई कैन राइट ओमेगा equals to 1/1/3 because omega is cube root of unity and therefore omega cube equals to 1. So omega cube क्या होगा, 1 होगा, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, -3/3, that is -1/3 into 3/3 equals to -1 into 27 which is equals to -27. Okay, so given relation is proved. So let's see the question number 2.